So now we were talking about the retaining wall loads, that these loads are applied as per the requirement because there is no such table or available in any code. So you have to apply this load as per your requirement. So you can see that the soil pressure or water pressure that are not uniform, but they are increasing when you go down in the depth, right? So it is rather than a uniformly distributed load, that are non-uniformly in trapezoidal shape. You can see that triangular. So this type of loading will be applied on the retaining wall. So here is the calculation for situation that we have the height of our story is 11 feet and the density of the soil is 120 pound per cubic feet, right? So the equation the ETAB is using, that pressure is equal to AX plus BY plus CZ plus D, and these are the X and Y, and these are the coordinates, and A, B, C, these are the coefficients, constants, and P is the pressure, right? So as we do not have any loads in X and Y direction because these are not acting, so we are left with this equation, P is equal to CZ plus D, right? So what is ETAB doing, how the ETAB calculate your pressure for the vertical shells, that it calculates that at the base of the wall, it taking Z as 0, right? So if you take Z as 0, so here is the explanation. When Z is 0 at the base of this wall, this is our wall, it is 11 feet long, and this is the soil pressure, whose density is 120. So at the base of the retaining wall, the ETAB is taking Z as 0. So when Z is 0, so only this P will be, so the pressure at this is 11 into 120, that is 1320 pound per square foot, right? We have pressure here is, you multiply the height, the depth of this retaining wall, that is 11, with the density of the soil, we will get the pressure. So here at the base, the pressure is 1320 pound per square foot. So when we put this in an equation, so Z is 0, so C will become 0, and we are left with P, so D will be equal to P. So the equation becomes D is equal to P is equal to 1320. This is at the base, right? What's ETAB is doing at the top, that ETAB is taking Z as 11, right? But here at the top, we have pressure 0, right? Because we do not have any height to multiply with the density to get the pressure. So when we multiply this height 0 into 120, we will get pressure 0. So at Z is equal to 11, so the pressure becomes 0. So when we put these values to calculate the value of C, right? So the equation becomes C into 12, right? Plus, this is not 12, C into, right? This is 12 feet, right? So when C is multiplied with the Z, so this is 12, right? So this is the plus D is the value that coming from here, is 1320. This is at the top. So the C value becomes minus 120. So for the simplicity and for the designers, when you will be doing your designs, so you will not be doing these calculations, because it is clear from the equations, if you have loads in only in Z direction, like retaining wall and water tanks. So what will be the density? For example, this is soil, the soil density is 120. So the C will be that minus value of that density, that is minus 120. If it is water, it will be minus 62.4, right? And what will be the value of D? So it will come out to be the density into the height. So it will be equal to pressure. So the pressure will be the value of the pressure will be equal to the value of the D. So this is how you will do it quickly, your design practice when you go to the consultancy, right? So let us apply these. We have D value 3020 PSF and C value minus 120. So we'll go to the ETAB and we will display only walls. And we will select, go to the plane, floor, and we will disappear these wall.
because we are not interested in these wall. Then so make the selected object invisible, right? So let us see how we can apply these loads. For this, you have to see the local axis 3 for the shell. So you have to go to the set view options and other assignments and click on the shell assignment as a local axis. So you can see the local axis of your sections. So you can see this blue one is the local 3 axis, Y right? And this is x plus x. and we are interested only in this blue direction because this is our local 3 axis. So you can see for this wall, the local 3 axis is inside the building because the pressure will be applied in this direction. So this direction is okay, but this direction is not okay because it is outward direction. So you have to select this wall. This is also outward, so we have to make it inward. So you have to select those shells to inverse or reverse the direction of the local axis 3 in order to apply the load outside from outside direction, right? So this is inward, so this is okay, this is outward, so make it inward. So we will go to edit shell, and we click on the reverse wall local 3 axis and click on apply. So you can see all of the direction of the local 3 axis is towards the building. So now when we apply pressure using local 3 axis, so pressure will be applied in the direction of the local 3, which is very realistic, right? So if the direction of the local 3 axis is outward and we apply the load in the direction of local 3 axis, so load will be applied in this direction, which is very wrong because the load will be applied from the outside. So now the local axis has been assigned. So now you have to select these walls, right, and go to assign shell loads and click on the non-uniform this time, and select this SDL because this is a super dead load, and for the direction you have to select the local 3 axis. So now these are the constants A, B, C. So A, B are 0. Our C is minus 120 pound per square foot, cubic foot, and our D is 1320 pound per square foot. So you have to select all of these very carefully, especially the direction, and then click on apply. So this load has been applied on your retaining walls. So this is how you apply non-uniform loads only on your retaining walls. The next one is the last one, because this I have kept this session a bit small because I'm not feeling well. So the next one is the overhead water tank loads, which is the similar to that of the retaining wall loads, but the only difference is the density of water is 62.4, and in that case, in the previous one we had 120 pound per cubic foot, right? So normally the overhead water tank height is 5 feet, and we have taken 5 feet in our model. So we will take height of the retaining wall, or the depth of the water is 5, and we multiply that with the density, so you will get 1212 PSF live load, right? So the loads on the walls will not considered in this modeling, which is the normal practice, which is not considered because we do not want our seismic forces to be applied on the water tank. However, these walls can be designed separately. When we had some time in at the end, so we will model it as separately, so you can see that the design of the overhead water tank walls is done separately, not be included in the whole structure, right? So you have to take the water load on this bottom slab of the overhead water tank, but please be careful that do not apply the lateral load of the water on your whole model, because when you do that, what will happen? Let me give you the proper reason. That when you do that, for example, this is our headwater tank, right? So when you apply the load is in the lateral direction, so these will be the live loads.
So when you apply the live load, so live load is also contributing in the seismic forces. So it will produce tension in your columns. So when you do that, you can do your case studies on that. So there will be tension in your column because columns are normally designed as a compression member. So when there is a tension in your section, it will be shown as a failed section, right? So these walls are normally designed as separately. So we will be designing it separately if we have time, right? So these are the normal minimum reinforcement are provided in these. So we'll also these at the end, and we will model this water tank separately, right? So you have to go to the plane and water tank bottom, and you have to select this to include the water load in your whole building. You have to go to the assign shell loads uniform, and this is the live load because it will be sometimes empty or it will be full. So you have to take it live. So it will be 312 pound per cubic foot, and the direction is gravity, and click on OK, right? So we have this section at the bottom. I have doubt that we have also assigned here some loads which will be not be present on the top of the water tank. We'll go to assign shell loads, and we will delete this live load. This is dead load. We will take only 10 PSF load on the top of the water tank. This is 50, which is a huge load. We will take 10, right? So I have replaced, so it will be shown only 10, right? So this was the whole story about the assignments of the loads to structural members. So if you have any questions, you can ask. Sir, how much live load you applied on overhead water tank slab? I have applied 312 pound per cubic foot, square foot. It is recommended by court, sir. Calculation के यार ये पे अच्छा सर, सिर्फ आपने हाइट को क्यों ऐसे ज़रब दिया, ना कोई थिकनेस, ना कोई मतलब के पूरे उसका जो एरिया है उसका मतलब एक ही डायमेंशन लिया है और उसको 62.4 से ज़रब दिया है? जी जी। तो सर मतलब ये तो सिर्फ हाइट आ गया, इसमें कोई थिकनेस का जिक्र, ना कोई पैरामीटर का। थिकनेस में इसका क्या काम है लोड का? आप तो लोड कैलकुलेट कर रहे हैं ना। लोड तो आपके पास जी एक्सिस वेरिएबल है ना, तो जी के साथ आप हाइट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, ये तो बेसिक चीजें है, या तो आपको क्लियर होनी चाहिए। नहीं सर, मेरा बैकग्राउंड स्ट्रक्चर का नहीं है, मैं वैसे बस ज्यादातर साइड से ही रहा हूं। अच्छा अच्छा, एक्चुअली आपके पास जो जिस डायरेक्शन में आपके पास लोड वेरिएबल है, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट। अगर आपके पास ये लोड्स इन एक्स डायरेक्शन है, तो फिर आप जो एक्स डायरेक्शन की डायमेंशन है उसके साथ फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसकी वेरिएबल वेरिएशन ऑफ द लोड्स इन द जी डायरेक्शन, तो इसलिए हम सिर्फ इसकी जो डेप्थ है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर आपकी एक्स एंड वाई डायरेक्शन में लोड्स वेरिएबल है, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट डायमेंशन विद द डेंसिटी ऑफ द वाटर और द सॉइल। इन दिस केस वाटर कॉलम। जी सर, जी डायरेक्शन का मतलब कि हम ये एज अ ग्रेविटी लोड ले रहे हैं, सिर्फ इसकी लेटरल जो एक्शन है उसको निगेट कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। आप लेटरल जो इसकी प्रेशर है वो आप यहाँ जो आपके एक्चुअल मॉडल है उसमें आप नहीं लेंगे, क्योंकि जिस मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इफ यू टेक दैट लोड देयर विल बी टेंशन इन योर कॉलम्स एंड दैट इट विल बी शोइंग यू फेल। तो आपके पास जो कॉलम है वो टेंशन में आपके पास फेल शो होंगी, तो द मॉडल विल बी नॉट करेक्ट। तो जो नॉर्मल ओवरहेड वाटर टैंक से जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स होती है, उनको नॉर्मली सेपरेट ही उसकी जो वॉल्स होती है उसको मॉडल किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है, लेकिन जो वाटर का लोड है उसको ओवरऑल स्ट्रक्चर में लिया जाता है, जिसको हमने यहाँ पे ले लिया। सर, कभी कभी तो ये वाटर टैंक्स हमारे साथ जो होते हैं जो बिल्डिंग्स में, इसको हम एज अ अर्थक्वेक रेजिस्टेंस लोड के तौर पे भी ये एक्ट करती है, जिसमें वो फ्लूइड होता है वो लेटरल लोड को रेजिस्ट करता है।
देखिए टुवर्ड्स द रेजिस्टेंस ऑफ द अर्थक्वेक फोर्सेस आपके पास ओवरहेड टैंक की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होती, वो निग्लेजिबली स्मॉल होती है, इसलिए हम इसकी जो अर्थक्वेक फोर्सेस का रेंज है उसमें हम नहीं लेते, टॉप तक हम नहीं लेते। सिर्फ इसको इसलिए डिजाइन किया जाता है कि ये वाटर का जो प्रेशर है उसको रेजिस्ट करे। ठीक है जी, ये इसमें बहुत सी चीजें, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल लेता हूँ क्योंकि डिजाइन इतनी आसान नहीं है जिस तरह लोग सोचते। देखिए आपके पास आपने तो लोड ले लिया, फॉर एग्जांपल मैं आपको डिस्प्ले कर देता हूँ कि लोड इज साइन ऑन शेल इज लाइव लोड, तो आपने सारे पैनल्स पे 50 पाउंड पर स्क्वायर फुट ले लिया। तो ज़रूरत ही नहीं है कि ये सारे जो पैनल्स है, जो ऑफिस है या शॉप्स है, उसमें सारे वक्त लोग मौजूद हो। आपने तो सॉफ्टवेयर को बता दिया कि मेरे जो पैनल्स है वो हर वक्त ही इसलिए ये लोड उस पर एक्ट करेगा। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि आपके पास कभी ये लोड होगा, कभी ये लोड नहीं होगा, कभी ये लोड होगा, कभी ये शॉप बंद होगा, ये ऑफिस बंद होगा, इसमें लोग नहीं होंगे, ये ऑफिस बंद होगा, इसमें लोग नहीं होंगे। सो ये आपके पास डिफरेंट, आप इसमें केस स्टडीज कर सकते हैं, आपके पास रिजल्ट में काफ़ी चेंजेस आ जाती है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड द लोड लाइव लोड पैटर्न्स, जो अभी तक इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं है। ईटैब मेरे ख्याल में ईटैब जो अब न्यू वर्जन आया है, वर्जन 20, उसमें ये ऑप्शन है कि आप इसको एज अ लाइव लोड पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, when we will be doing the designing of structural members, so I will quickly design this or have a drink for you for as a separately as well. तो सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, जी जी, पीपीटी नंबर 5 में जो 27 आ रहे हैं वो समझ में नहीं आया सर। PT5 में स्लाइड क्या? 5, हाँ स्लाइड नंबर जो 5 है उसमें जो 27 कैलकुलेट करे एरिया लोड, आज के पीपीटी लेक्चर, फाइल जो, आज के लेक्चर में? जी जी सर, जी जी स्लाइड नंबर 5 में सर, जी जी ये 27 जो है ना सर, 28 22 मल्टी 27 सर, ये सब नहीं आया, 27 समझ में नहीं आया सर। 27, these are the dimension of the panels. For example, अगर आप यहाँ पे जाए तो आप ये पैनल देखेंगे कि ये मेरे पास पैनल कितना है, ये 26 8 इंचेस आ रहा है, हमने इसको 27 ले लिया, राइट। और इसको हमने 20 ले लिया। So this is the dimension I have used to calculate the area load for the partition walls. This is 20 and this is 27. So these are the two values, 20 and 27. सर स्लाइड नंबर 9 में सर, जी जी, इसमें जो लास्ट में 12 मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना सर, स्लाइड नंबर 8 में सर, 8 में जी, जब ये सी डैश मल्टीप्लाई बाय 12 सर, ये जी कंसीडर कर रहे हैं तो 11 होगा ना फिर सर इक्वेशन में। जी जी जी, बिल्कुल ये 11 होगा। थैंक यू सर। जी, और कोई क्वेश्चन है, काइंडली पूछ ली। सर हम जो अगर पार्किंग हो, पार्किंग स्लैब डिजाइन करना हो तो इसके लिए कितना लाइव लोड लेंगे सर? रैम के लिए तो 60 पाउंड पर स्क्वायर फीट हम ले लिया, लेकिन मसलन अगर यहाँ पे डबल बेसमेंट हो ना, यहाँ पे तो राफ्ट है। आप मेरे ख्याल में आपने लेट ज्वाइन किया, क्या किया आपने? सर मैं थोड़ा लेट आया। अच्छा, मैं आपको समझा, तो ये तो हमने कवर कर दिया, आप वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। रैम के लिए देखिए, ये आपके पास लाइव लोड्स है फॉर द पार्किंग एरियाज। ये आप ACI जो AC716 टेबल 4.3-1, उसमें कह रहे कि व्हीकल बैरियर्स मीन्स फॉर द पार्किंग एरिया, जो आप कह रहे कि सेकंड बेसमेंट, थर्ड बेसमेंट, फर्स्ट बेसमेंट हो, तो उसके लिए आप लोड इसको कौन सा लेंगे, और वॉकवेज और एलिवेटेड प्लेटफॉर्म्स। एलिवेटेड प्लेटफॉर्म मीन्स द रैम्प and vehicle barriers means the area on which the parking will be subjected, for अच्छा example। अच्छा सर, ओके, इसमें मैं नहीं था, लेट आया था। ओके अच्छा, सर, थैंक यू। इस रैंप के लिए आपके पास 60 है और आप पार्किंग एरिया के लिए आपके पास 60 है। So let us run this analysis. So before running this analysis, you have to check the model. So you have to go to the
analyze and check the model. And How about the diaphragm animation, sir? we will be doing that. Let us check the model, right? So before doing the analysis, you have to check the model. So you have to select all and click on OK. So it will start checking your model if there any overlapping of the areas or missing joints, or there is not connected with each other properly. So it will give you warnings. So make sure that you perform the analysis. Before the analysis, check the model for these warnings. Sometimes you remove some of the warnings, but some of the warnings will not be, you cannot remove that by doing it again and again. So you can go and do your analysis with that error as well. So there will be no significant changes in your design. सर जी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें हम न्यूमेरिकल सिमुलेशन करते हैं, अगर कोई एरर आ जाता है तो उसमें जो रनिंग में जो सॉफ्टवेयर रन करता है उसमें अबॉर्ट हो जाता है, मन आगे उसमें ये होते हैं कि एरर्स आ जाते हैं, इसमें ऐसा प्रोसेस है सर बाकी इसमें ETABS में सर? जी इसमें अगर आपके पास एरर बहुत ज्यादा होती है तो आपके पास ये एनालिसिस रन नहीं होता। उसके सर जी इसको अकेडमी तो इस्तेमाल करते हैं, मिसाल जो इसमें रिसर्च पेपर्स के लिए या MSc के रिसर्च पेपर में इसे यूज कर सकते हैं इसे? हाँ बिल्कुल, आप ETAB इसको यूज कर सकते हैं, PhD के लिए भी यूज कर सकते हैं, आप MSc रिसर्च के लिए भी यूज कर सकते हैं, BSc के लिए भी यूज कर सकते हैं। सर फिर आगे इसको कैसे शो करेंगे अगर कि कहीं जाना हो तो क्योंकि हम क्रैक वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका हमारा लाइसेंस नहीं है, फिर इसको हम किससे शो करेंगे? तो लाइसेंस ना होना, वो तो आपसे ये पूछ रहे कि आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट तो आप क्रैक वर्जन यूज कर सकते हैं, एज अ प्रोफेशनल आप इसको क्रैक यूज नहीं कर सकते। ओके सर, कोई इशू तो नहीं है ना अगर मिसाल पेपर के लिए राइट अप करें तो ऐसा हो? नहीं कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं। Okay, thank you very much. Right, you can see that model has been checked and 2 warnings messages has been displayed. That is the ground floor wall 63 and 39 are too close, and this 64 and 39 are too close. So we have to remove these errors. So how we can do that? So let us go to the select properties, labels, and then go to the shell labels. And we have to select the wall 39 and let us delete that, right? So this will be deleted from the basement, and you have to draw that again. So there will be no error after that. I hope so. So again, you have to apply the load on this wall because you have deleted that. So this time it will be not any error because we have do not have enough time. So let us run the analysis. So by going into the analyze, so you can set your cases to run, click on this. So if you want a specific cases to run, so you can click this, do not run this case. You can select all that, do not run all, but we want to run all of this, we'll run now. So during this running of this process, you can ask questions. Sir, how about machine and diaphragm, sir? We did not do that. So this is normally is done by the ETAB automatically. So let us cancel this. And we will select all, right? And we will go to the assign shell and click on the floor auto mesh option and click on this auto cookies cut object instructional elements, and click on all these, further divide into 48
and in advance you have to click on 4 feet, right? So keep this as default and click on OK. So all the floors has been meshed automatically. Again, select all by clicking here, select all, and again go to assign shell, and this time wall auto mesh option. And again, you have to click on this auto rectangular mesh and go to the advanced, and you have to select the same value which we have selected for the slab. We selected for the floor as 4 feet. You have selected for the wall as well 4 feet. Click on apply. So this meshing has been done. Another meshing that some of the students are confused. So let us display only the retaining walls. And we will display the right. So these are the supports. You can increase the support by dividing this area in physical meshing, right? We have done now the meshing of this wall as an internal meshing. So you can do this external by selecting the shells and go to edit shell, and then divide shell, right? So you can divide this. So let us check in vertical direction. This is 1, 2. So this is not the direction. Let us undo previous selection and make this 3 and this 1. So the number of support will increase, right? So only for the last basement, we have to do this external meshing to increase the support, because this is not our case in which we have only 2 supports at the end of each wall, right? So you can divide into 3. So the direction of these walls are different. So we have to do it separately. Now you can see the number of the supports are increased, because this is the actual scenario. I was about to do this meshing and all of this in the analysis part, but the students are asking again and again, so let us do it here. Let me uncheck this. Now these are the same. Make this 1, make this 3. On apply. Now the external meshing, physical meshing has been done. These are the left walls, leave that, right? So now this is complete, and we will run this analysis and we will see some of the results. Sir, do you take file? Yeah. सर जो साइड प्रेशर हमने अप्लाई किया, अगर इसके साथ जो है ना कोई व्हील का लोड हो या कोई पार्किंग के इसके साथ जो है ना वो हो, तो इसका लोड भी इसके साथ कैलकुलेट करना होगा, जो सरचार्ज लोड हो इसके साथ। जी जी, सरचार्ज लोड आप उस पे लेंगे, ये हमने सरचार्ज लोड इस पे लगाया है ना जी। अगर इसके साथ जो है ना, मतलब इसके साथ जो है ना कोई मशीनरी हो या कोई पार्किंग का लोड हो, तो वो भी इसके साथ कैलकुलेट करना होगा। जैसे कि अभी हमने सिर्फ जो है ना सिर्फ साइल प्रेशर जो है ना सिर्फ साइल का वो लोड अप्लाई किया हुआ है, जी जी। तो वो भी लेंगे फिर इसके साथ। हाँ ना, अगर कोई सरचार्ज लोड है, आपको पता है कि यहाँ पे सरचार्ज लोड है, तो आप उसमें लेंगे।
सर अगर वाटर टेबल जो है ना वो बेसमेंट के करीब ही हो तो फिर क्या करना होगा? मतलब अगर साइड में जो है ना वो वाटर टेबल फिर जो है आप ना वो पाइल्स पे जाएंगे, पाइल्स पे जाएंगे फिर। नहीं मतलब अगर रिटेनिंग वॉल के साथ जो है ना वो जो है ना वाटर हो तो फिर तो हो ना साइड आपको, जो है ना वो मतलब तो वाटर हो ना, तो आप उसके लिए आप उस डिजाइन करें ना। तो उसके जो है ना वो डेंसिटी वगैरह कुछ इसमें जो है ना वो उसका जो कांस्टेंट है वो जो के फैक्टर है वगैरह उसके जो है ना वो थ्योरी भी है फाउंडेशन में, तो वही फिर यूज करेंगे या नहीं? इसका जो है ना सेम ही तरीका होगा? नहीं, वही आप जो आपके पास जो कोफिशिएंट्स है, जो आपके पास एक्टिव एंड पैसिव प्रेशर के कोफिशिएंट्स है, नॉर्मली जो आपके पास एक्टिव प्रेशर के कोफिशिएंट्स 0.33 यूज होते हैं, वो आप यूज करेंगे, राइट। लेकिन नॉर्मली वो आपके पास सोल्जर पाइल्स में यूज होते हैं कि आपके पास 3-4 बेसमेंट्स है और आप एक्सकेवेशन करना चाहते हैं, लेकिन इर्द गिर्द आपके इलाकों में उस पर आबादी है, तो आप उसके लिए सोल्जर पाइल्स डिजाइन करेंगे, उस पर आप जो एक्टिव प्रेशर है वो लगाएंगे, उसके लिए आप के फैक्टर यूज करेंगे। यहाँ पे तो के फैक्टर ठीक यूज है, करने का जरूरत नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू ठीक सर। है, ये जो हमने लोड लगाया, ये हमने टोटल लोड लगाया है, ठीक है जी। ये हम काफी सेफ साइड पे गए, लेकिन अगर आप के फैक्टर यूज करें यहाँ पे भी एक्टिव प्रेशर का, एक्टिव प्रेशर मींस द सॉइल इज एक्टिंग अप्लाइंग अ प्रेशर ऑन द वॉल, तो आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं बाय 33%। तो आप इस जो लोड आपके पास आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल पास जो डी का वैल्यू आ रही थी 1320, तो इसको आप 0.33 के साथ मल्टीप्लाई करके इसको रिड्यूस भी कर सकते, कोड आपको अलाउ करता है। लेकिन अगर आप टोटल यूज करें तो कोई कोड आपको ये नहीं कहता कि आप इसको यूज ना करें। अगर आप टोटल के लिए डिजाइन करना चाहते हो इट इज गुड, लेकिन अगर आपके पास कोई रिटेनिंग वॉल फेल हो रही है टोटल लोड पे, तो आप इसको 0.33 के साथ मल्टीप्लाई भी करके उसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, कोड आपको अलाउ करता है। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। सर स्ट्रक्चर हम उसका मॉडल बनाते हैं, उसको डिजाइन करते हैं, लेकिन किस बुनियाद पर हम फाउंडेशन को डिजाइन करते हैं सर? किस बुनियाद, क्या मतलब है? मतलब ये कि अगर सर हमने एक कान बना एक मॉडल बनाते हैं बिल्डिंग के सारे उसको डिजाइन करते हैं, लेकिन उस बिल्डिंग के लिए हमारे पास सॉइल रिपोर्ट भी नहीं है, लेकिन हम उसकी फाउंडेशन कैसे डिजाइन करेंगे? कि इधर हम ड्राफ्ट इस्तेमाल करेंगे, आइसोलेट इस्तेमाल करेंगे या पाइल्स में जाएंगे सर? देखिए, अगर आपके पास रिपोर्ट नहीं है तो फिर आप हाई राइज बिल्डिंग डिजाइन नहीं कर सकते, ठीक है जी, दिस इज मस्ट फर्स्ट थिंग। दूसरा, अगर आपके पास कोई 3 स्टोरी है, आपके पास 2 स्टोरी बिल्डिंग है, तो उसके लिए तो आपके पास रिपोर्ट की जरूरत भी नहीं है, आप आइसोलेटेड और कंबाइंड फुटिंग ले जाएंगे। लेकिन अगर आप हाई राइज बिल्डिंग कर रहे द स्टोरीज दैट आर ग्रेटर देन 5 स्टोरीज, और फिर आपके पास 10 स्टोरीज 15 स्टोरीज, तो अगर आपके पास सॉइल रिपोर्ट ना हो तो आप डिजाइन ना करें, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा। हाँ, सर इंडस्ट्री में ये चीज है, अगर कोई 5 स्टोरी 6 स्टोरी अगर वो इस इंडस्ट्री में जाते हैं, क्या वहां पे वो सॉइल रिपोर्ट वो कंडक्ट करते हैं, या ऐसे किसी जो प्रीवियस उसकी हिस्ट्री होती है उस तरह से डिजाइन करते हैं, ऐसा कुछ है सर? नहीं नहीं, प्रीवियस से नहीं, आप एक्चुअल डिजाइन होते हैं। हर एक जो आपके पास प्रोजेक्ट है उसके लिए आप टेस्ट करेंगे, टेस्ट के बगैर कभी भी स्ट्रक्चर डिजाइनिंग ना करें। आपके पास जूटेक रिपोर्ट ना हो तो आप डिजाइन ना करें, ठीक है जी। क्योंकि अगर आप अगर कल ये बिल्डिंग फेल हो जाए, ये सेटलमेंट हो जाए, तो सारा इल्जाम स्ट्रक्चर इंजीनियर पे आएगा। फिर आप कोर्ट भी जा सकते हैं, उसमें आपके पास आपके ऊपर केस भी हो सकता है कि आपने जो टेक्निकल रिपोर्ट क्यों नहीं, रिक्वायरमेंट क्यों नहीं पूछी, कि आप मुझे जो टेक्निकल रिपोर्ट प्रोवाइड कर, आपने डिजाइन किस बेसिस पे किया है, ठीक है। ओके सर। So the analysis has been run, so you can see different results. So the first one is, let us go to display and let us show the deform shape, and let me display all of these. So now you can see the deform shape of our model. Let us display the floors as well. So in the deform shape tab, you can select your desired case, whether you want to display the deform shape for the dead, for the live, or for the load combination. So this is the deform shape for the dead.
You can also see a deform shape for the earthquake as well. When you have a very large system or model, so it will take time in each and every command. So now you can see this system or the building has been shifted in the X direction. So you can verify it by clicking on this start animation as well, because we do not have this this much time, because we have only 3 minutes left. So you can check another deform shape for, let's suppose, for this combination 1.2D plus 1.6 live. And you can see on the left hand corner the maximum and the minimum displacement in the Z direction, right? So you can also draw the contours in the Z direction, in X and Y direction. Because this loads has been assigned in the gravity direction, so the displacement are shown in the Z direction, that is in the gravity direction. So now you can see the contours as well, and this is the maximum displacement in our model for the design combo 1.2 plus 1.6 for the live. That is minimum is 0.6, because we will be interested in this. This is 0.5. So we have the maximum displacement in the Z direction of the slab is 0.5 inches for this combo, right? You can also see different stresses and forces. Let's suppose, let us see the forces in the bending moment diagram in our frames. This is moment 3.3 for our combo 2. It is 1.2 plus 1.6. So you can see the bending moment, right? So this is the bending moment diagram for the beam, and this is the bending moment diagram for the column. So you can right click on this beam. It will show you the moments and the shear values, and also you can see the deflection, the deflecting shape and the deflection value. It is 0.11 inches at 10 feet, right? You can select different combos, and you can see the shear force and minimum diagram for different combos, right? So you can verify if someone is not very confident or not have doubts in their mind. So you can do simply load cases, case studies, that you design your system and you calculate these moments and you verify it by manual calculations, right? So here is the another option where you can see the stresses in your slab, right? So let us go to the plan. So these are normally useful for the research purposes. So these are the different stresses. These are the normal stresses in X direction. These are the normal stresses in X direction, Y direction. These are the shear stresses, right? So these are the principal maximum stresses, and these are the principal minimum stresses. These are the maximum shear stresses. These are the out of the plane shear stresses, right? And this is out of the plane maximum shear stresses. So you can see different stresses in your slab, shell, in formation, in raft, where you are interested in, right? This was the whole story about the today session 6, and tomorrow inshallah we will talking about the checking the drift and torsion irregularity and how